Okay, one more minute. You'll have to wait. I've just asked up to bring up the module. Meantime, you also take up your BK accounts module with you. आज हम उसमें के MCQ सॉल्व करने वाले हैं, प्लस में रिटायरमेंट एंड डेथ के भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. Dear friends, in your module, page number 8.86, illustration number 1. वहां पे उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है उसको इग्नोर करो, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. डोंट ट्राई टू पी. Dear friends, in your module, page number 8.86, illustration number 1. वहां पे उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है उसको इग्नोर करो, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. डोंट ट्राई टू पीप इनटू द सॉल्यूशंस. ओके, हम सॉल्व करेंगे. Page 8.86, illustration number 1. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3/5 and 2/5. So the ratio is 3:2. Their balance sheet as on 1st Jan 2015 is as given below. Capital account of A and B, trade payer reserves and trade payables, that is creditors. Plant and machinery, inventories, trade receivables, that is debtors, balance at bank, that is bank balance, and cash in hand, cash balance. B retires from the business owing to the illness, and A takes it over. The following revaluation was made. Goodwill of the firm valued at 25,000. Depreciate plant and machinery by 7.5% and inventories by 15%. Doubtful debts provision is raised against trade receivables at 5% and discount reserve against trade payables at 2%. Journalize the above transaction in the books of the firm and close partner's account as on 1st Jan 2015. Also give opening balance sheet of A. तो देखो, उन्होंने जर्नल एंट्रीज भी पास करने को बोला है, कैपिटल अकाउंट भी बनाने को बोला है, एंड बैलेंस शीट भी बनाने को बोला है. तो आप डेफिनेटली आप ऑब्जर्व करो कि हमको उन्होंने बैलेंस शीट भी बनाने को बोला है. सो फॉर दैट हम लोगों को जो है कैलकुलेशंस करना पड़ेगा सब. फॉर दैट वी विल हैव टू प्रिपेयर revaluation account, partners capital account, cash out bank account, and balance sheet and journal. Just let me check out whether I have a format ready with me or not. Okay, so here as a first part I'm going to prepare is revaluation account in the books of A and
B, revaluation account. Then partners capital account, A, B. Then कैश और बैंक अकाउंट, यहाँ पे हम कैश अकाउंट बनाएंगे क्योंकि दोनों दिया है आपको. And apart from that, we are required to prepare balance sheet. So यहाँ पे टॉप रहेगा बैलेंस शीट in bracket after retirement as on. When has the partner retired? कुछ डेट नहीं बोला है तो we assume that same date as on 1st January 2015. Liabilities rupees, assets rupees. Okay. Is the screen now visible? So dear friends, now the first thing what we are required to do is, उन्होंने साथ में अपने को जर्नल एंट्रीज भी पूछा है. So this would be the journal format. In the books of A and B journal. अभी first thing we need to do is transfer the old balance sheet to new balance sheet. So let us go ahead towards new balance sheet. First, capital account will go to capital account by balance brought down. A 20,000, B 15,000. उसके बाद अपने को दिया है reserve account, that is accumulated profit. We will distribute it in the next step. Trade payables will go to liability side. Trade payables 7,500. Asset side में plant and machinery 20,000. Then
Inventories 16,000. Trade receivable 15,000. Balance at bank 6,000. कैश बैलेंस हम कैश अकाउंट में लिख देते हैं टू बैलेंस डॉट डाउन 500. Now dear friends, second step is distribute the accumulated profit. So it is there in the name called as reserves account. तो उसका journal entries भी उन्होंने बोला है. So first we will pass up the journal entries. First, we will record the journal entry. तो सबसे पहले date 2015 Jan 1st. We will write reserves account debited to is capital account to is capital account. Now the amount of reserve is 15,000. It shall be distributed among the partners in the ratio of 3:2. So 3,000 into 3, 9,000, 6,000. Being reserves distributed. इसका एक इफेक्ट रिजर्व अकाउंट में जाएगा, दूसरा इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में. आई reserves account 9,000, 6,000. Is that okay up to this part? कोई डाउट है? Now further, distribute accumulated losses not there. Deal with adjustment. अभी जब कभी भी adjustments की तरफ हम जाते हैं, so we need to go step by step. The first one is the goodwill of the firm is valued at 25,000. तो देखो goodwill valued, journal entry क्या आएगा? Goodwill valued मतलब goodwill raised, goodwill account debited to is capital to b's capital. अभी goodwill was 25,000 divided by 5. So that is 5,000 into 3, 15,000 and 10,000. फिर आप उस goodwill को राइट ऑफ कर दो. अभी सर यहाँ पे तो बोला नहीं है राइट ऑफ करो, तो ये आपके लेवल पे there is one accounting standard AS
26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 जो गुडविल के साथ में डील करता है. Now what does that AS26 say? That AS26 definitely says that the goodwill internally generated, अभी ये internally generated है, मतलब पार्टनर्स ने जनरेट किया, रेस किया है, should not be maintained in the books. ये इंपॉर्टेंट नोट है, तो उसको राइट ऑफ कर दो. राइट ऑफ करने के लिए क्या रहेगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिटेड टू गुडविल, दैट मींस इज कैपिटल डेबिटेड टू गुडविल 25,000. 25,000 या तो फिर मतलब यहाँ पे देखो हम दो एंट्री पास करेंगे. पहले गुडविल को रेस करो, कैन फर्स्ट को गुडविल रेज, गुडविल अकाउंट debited 25,000 to A's capital account to B's capital account, 15,000, 10,000. Being goodwill raised. वापस से and first को A's capital account debited to goodwill account 25,000, 25,000. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. Being goodwill written off as per AS26. अभी ये दो जर्नल एंट्री मैंने येलो कलर में डाल दिया, और यू कैन पास वन सिंगल एंट्री और सिंगल एंट्री, इन दोनों को कंबाइन करो. देखो ये दोनों जर्नल एंट्री को अगर हमने कंबाइन किया, गुडविल डेबिटेड कैंसल, गुडविल क्रेडिटेड कैंसल, 25 25 कैंसल हो गया. अभी ए डेबिटेड 25, ए क्रेडिटेड 15 कैंसल्ड, तो बच गया ए डेबिटेड 10,000. तो यू कैन पास अ सिंगल एंट्री, कैन फर्स्ट को यू कैन पास अ सिंगल एंट्री called as A's capital account debited
to P's capital account 10,000, 10,000 being P's goodwill adjusted. Is that second part of entry clear? या तो आप ऊपर जो येलो कलर में मैंने दो एंट्री बताया है वो पास करो, या तो ये पर्पल कलर वाला एक एंट्री पास करो। दोनों में से कोई भी एंट्री आप पास करोगे, इट इज करेक्ट। इज दैट ओके विथ ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है आपको? I have been to the main screen for a few seconds. Is there any doubt with that part to you? 12th स्टैंडर्ड में हम AS 26 अप्लाई नहीं करते थे। CA फाउंडेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल रहेंगे आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऐसे कहीं पे ऊपर आपके कॉलम में मार्जिन्स में लिख लो, कुछ अलग कलर के पेन से लिख लो। मैं लिखवाता हूँ। व्हाट डज दैट से? Retiring, Adrian Lopez, it says that what is the journal entry to write off? Tell me. Journal entry to write off the goodwill. Journal entry क्या आएगा मुझको बताओ। Continuing partner to goodwill. अभी A and B दो ही पार्टनर थे, उसमें से B रिटायर हो गया। Who is continuing partner? Tell me. Adrian. Who is continuing partner? अभी समझा? Why only it is transferred to A? समझा आपको? ओके तो कहीं पे आपके व्हाट वी कैन से मार्जिन में कहीं पे दूसरे कलर के पेन से या पेंसिल से लिख लो, एज पर AS 26, एज पर AS 26 internally generated goodwill account shall not be maintained in the books of accounts. Shall not be maintained in the books of accounts. That is write off the goodwill. That is write off the goodwill. Is that clear to all of you? तो या तो आप येलो में पास किया हुआ दो एंट्री पास करो, या तो पर्पल वाला एक ही एंट्री पास करो। You want me to record with which concept? First one or second one? हम अपने बुक में कौन सा फॉलो करेंगे? जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है वही करेंगे। I don't mind following any of that. दोनों करेक्ट है। Account is inaccurate science. Alternative approaches are always possible. आप बोलो, हम वो फॉलो करते हैं अपने बुक्स में। We will follow the first part. जो येलो में लिखा है वो फॉलो करते हैं। पहले गुडविल रेस किया हमने,
पहले गुडविल रेस किया तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। इसका फर्स्ट इफेक्ट गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। बाय गुडविल अकाउंट 15,000, 10,000। फिर दूसरा एंट्री था एस कैपिटल डेबिटेड टू गुडविल 25,000। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू गुडविल, ए में 25,000, बी में 0। ये दोनों जर्नल एंट्री भी मैंने रिकॉर्ड कर दी, कोई डाउट? Now we go to the next adjustment. What does it say? Depreciate plant and machinery by 5% and inventories by 15%. तो depreciation का जर्नल एंट्री, एसेट का वैल्यू कम होगा, पहले हम एसेट में से उसको लेस करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी लेस depreciation at the rate of how much depreciation? Plant and machinery at the rate of 7.5%. तो 20,000 का 7.5%, 1,500। आउटर कॉलम में 18,500। इन्वेंटरीज लेस depreciation 15%। 10,000 का 15%, 1,600 plus 800, that would be 2,400. Do you get that? So outer column 13,600. Have you got that amount? तो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया। एसेट का वैल्यू कम हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का अमाउंट 1,500 टू इन्वेंटरीज अकाउंट 2,400। ओके, अभी जर्नल एंट्री में भी रिकॉर्ड कर देते हैं। कैन फर्स्ट revaluation account debited to plant and machinery account to inventories account. Plant and machinery 1,500, inventories 2,400, total 3,900. Being assets revalued. Is that okay? एडजस्टमेंट नंबर 2 तक कोई डाउट है आपको?
एडजस्टमेंट 2 तक कोई डाउट है? ओके, नाउ वी गो टू एडजस्टमेंट नंबर 3. Doubtful debts provision is to raised against trade receivable at 5%. So RDD सबसे पहले बैलेंस शीट में उसको हम ट्रेड रिसीवेबल में से लेस करेंगे. लेस RDD at the rate of 5%. 750. Outer column 14 to 50. And a discount reserve against ट्रेड पेएबल्स, तो वो लायबिलिटी से रिलेटेड है, तो हम उसको बाद में देखते हैं. यहाँ पे एसेट का वैल्यू कम हो गया, एसेट का वैल्यू कम हो गया, तो लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू RDD अकाउंट. $750. जर्नल एंट्री भी पास कर देते हैं. Revaluation account debited to RDD account. $750. Being RDD created at the rate of 5%. अभी क्रेडिटर्स का पार्ट बाकी है. एंड रिजर्व डिस्काउंट against trade payables at 2%. Less reserve or discount. 750 का 2%. 150. Do you get that? Outer column 7350. लायबिलिटी का वैल्यू कम हो गया, तो अपने को प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. 150. जर्नल एंट्री भी पास कर देते हैं. कैन फर्स्ट reserve for discount on creditors account debited to revaluation account. 150. 150. Being reserved for discount on creditors created. Is that okay? तो अभी
सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए, बट सारे जर्नल एंट्रीज नहीं। सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए, जर्नल एंट्रीज नहीं। देखो, इवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो आप देखो हमको डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। कैन सी डेबिट साइड टोटल इज 4650। तो में से क्रेडिट साइड का टोटल जब हम माइनस करेंगे तो वी गेट 4500 रुपीज लॉस बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस ए ये दोनों को जाएगा ये लॉस का अमाउंट। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4500 divided by 5, 900 into 3, 2700 for A and 1800 for B. Is that okay? का जर्नल एंट्री पास करेंगे and first is capital account debited, is capital account debited to revaluation account 1700, 1800, total 4500, being loss on revaluation. Is that okay? अभी इसका दूसरा इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू revaluation account A 2700, B 1800. अभी कैपिटल अकाउंट क्लोज करने से पहले आई शुड टेल यू दैट जो भी पार्टनर का लोन, सॉरी रिटायरिंग पार्टनर है उसका अकाउंट पहले क्लोज करना है। उसको अमाउंट हमने पे किया ऐसा बताया है क्या? हैव वी पेड एनी अमाउंट टू हिम, ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला। अमाउंट पे किया ऐसा बोला नहीं है। तो अकाउंटिंग रूल क्या बोलता है? द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर shall be transferred to his loan account. It shall be transferred to his loan account. तो यहाँ पे to B's loan account, A का 0, अभी 31,000 minus 1,800, 29,200 ये उसका लोन अमाउंट आएगा। ये उसका लोन अमाउंट आएगा। जस्ट स्पेयर मी अ मिनट।